हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं इस ड्राइंग को किस तरह से हम लोग ऑटोकैड में बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग ऑटोकैड में आते हैं। ये हमारा कुछ आपका यहाँ से 84x19 का, मैं इसे फर्स्ट स्क्वायर ले लूँगा, एक 184x19 का। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑटोकैड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ लेयर में आने के बाद मैं यहाँ पे अपना 0.30 का रखने वाला हूँ लेयर और ये हमारा कलर जो बाई लेयर रहेगा। और हमें क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। एज यू कैन सी रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ से कुछ 84 का लेना है, 84x में ले लूँगा और ये हमारा 19 का, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटर कर दूंगा, ये हमारा ओके हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अभी थिकनेस नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसे ऑन कीजिएगा ना तो ये आपका थिकनेस दिखने लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है हमारा 6x6 का चैम्बर है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो मैं 6x6 का चैम्बर ले लेता हूँ। नॉर्मली हम यहाँ पे आ जाएंगे फ्लिट में, आप यहाँ पे चैम्बर ले लीजिएगा, फर्स्ट सिलेक्ट कीजिएगा, देन आप यहाँ पे डिस्टेंस में आ जाइएगा, 6 कीजिएगा, टैब, ओके, इंटर करके फिर इंट 6 इंटर। ओके, अब हमें बोल रहा है सेकंड सिलेक्ट सेकंड लाइन। ओके, तो मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करूंगा, ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं वन मोर टाइम इंटर कर दूंगा, इंटर करने से फिर बोलेगा ये हमारा फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद बोलेगा इंटर करना है, आई वांट डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस 6 इंटर, 6 इंटर, सेकंड लाइन, दिस इज आवर सेकंड लाइन, यू कैन सी हियर, ये हमारा बन के अभी आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारा बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ से कुछ 53 एम का लेंथ का मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो 53 एम का मैं एक लाइन लेना चाहता हूँ यहाँ से, और मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और कुछ 53-60 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ 6 mm का है, तो 3 मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऑफसेट ले करके 3 इंटर, इसको सेलेक्ट करके इधर ले लीजिए, ठीक है ना। फिर इंटर, फिर इंटर, 3 इंटर, कुछ इस तरह से आप इधर ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपका इधर हो चुका है। उसके बाद ये हमारा क्या है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से 16 + 18 का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 16 + 18 का एक लेना चाहता हूँ लाइन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ 23 का ऑफसेट ले लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं 23 का ऑफसेट ले लूँगा, 11.5 ऑफसेट 11.5। ओके, दिस टू दिस, ओके, इंटर, वन मोर टाइम इंटर, 11.5। ओके, और मैं कुछ इसको भी यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। ये हमारा अब तक काम हो चुका है, जो हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से हमें एक और ऑफसेट लेना है 16 और 18 का। तो मैं इंटर कर देता हूँ, इंटर, आई वांट 16 mm ऑफसेट लाइक दैट। ओके, ये हमारा 16 mm का ऑफसेट हो जाएगा। मैं जस्ट अभी इसे ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और हमें 18 का ऑफसेट चाहिए, इसकी ऑफसेट ले करके 18 इंटर, इंटर। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, आप यहाँ से किसे क्लोज करना है किसे कट करना है, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो क्लोज किसे करना और कट किसे करना आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। और ये हमारा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका डिस्टेंस अभी कुछ दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ ये आपका जो 7 mm का डायमीटर है उसे मैं ले लूँ, ठीक है ना। 7 mm का डायमीटर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45/2। ओके, तो ये हमारा कुछ 12.5 आ जाएगा ना। हाँ, 12.5 का हमें एक और ऑफसेट चाहिए साइड से, ठीक है। तो मैं 12.5 का ऑफसेट ले लेता हूँ, तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ और कुछ 12.5 पर साइड। ओके, ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है क्या, शायद ये हमारा गलती है कहीं पे। हाँ सॉरी, 12.5 नहीं होगा, 22.5 होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, 22.5 होगा हमारा साइड का, 22.5। ओके,
कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटर कर दूंगा मैं, फिर इंटर कर दूंगा 22.5 इंटर, प्रेस सेंटर लाइन और दिस साइड। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 16 mm है तो हमें यहाँ पे 7 का डायमीटर और 8 का रेडियस लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 7 डायमीटर और 8 का रेडियस। तो डायमीटर आई वांट this point 7 mm, enter, one more time enter, this point 3.5, 3.5, ओके 3.5 रेडियस ही मिला। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी दिखा। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, R8 का रेडियस लेना। तो आई वांट रेडियस, ओके, कुछ इस तरह से मैं R8 का रेडियस ले लूँगा, ठीक है ना। आप लोग भी यहाँ से आराम से ले सकते हैं R8 का रेडियस, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस भी आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या क्या करने की जरूरत है मैं देख लेता हूँ। मैं ऊपर से कट करने की कोशिश करता हूँ, बट यही है जो सेंटर है ना, ये कुछ 6 का, ठीक है ना। तो इसके 6 पे मैं एक यहाँ पे रेडियस 6 का इस पॉइंट से मैं 2 mm नीचे आकर के एक 6 का डायमीटर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आई वांट ऑफसेट 2 mm, एंटर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 का कुछ डायमीटर ले लेना है, ठीक है ना, इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से। तो डायमीटर वी कैन 6, ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी जॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद अभी हमें क्या करना, कुछ ट्रिम करने की जरूरत है। तो मैं ट्रिम ले लेता हूँ, ट्रिम का ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है ना। और आई वांट टू ट्रिम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट ऑल्सो आई वांट टू ट्रिम। ये इजीली आप लोग ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, फुल इजीली यू कैन ट्रिम हियर। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से भी ट्रिम हो चुका है। ये हमारा ऊपर में किस तरह से आ रहा है, ये 6 mm है, तो शायद ये हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और शायद ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी क्लियर हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा लाइन है ना, उसके बाद हमें क्लोज करने की ज़रूरत है। तो इस लाइन को मैं यहाँ से और यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं इस लाइन को भी शायद मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ और इसे भी क्लोज कर दूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा अभी फालतू की चीज़ें हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं चाहिए आप लोग यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ट्रिम करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। इन ईजी वे वी कैन ट्रिम हियर एवरीथिंग। ओके, दिस इज ओके आई थिंक, और वी विल, sorry, control Z, just press only, okay. If anything trim by mistake, okay, you can trim or delete also, but I just suggest you can trim. Okay, this is okay. Now what I have to do, there is a line, that point is 23, okay. So this is the 23. I will just join this to this, okay. I will open, okay, this to this, okay, enter. Okay, now enter one more time. I will this to this. This is our joint point. Okay, so we have done this work now. So what I have to do now, there is a trimming point, so we can trim over here, or I want to trim, this is I want to trim, or this is I want to trim. Okay, and top side there is a R2 radius. Okay, so we need to put it R2 radius, or select object, okay, R, enter, to enter, or this point. Okay, so this is completed. One more time enter, select first object, enter, okay, R, enter, to enter. Okay, so you can close here. Okay, so this has been completed now. So downside, as a downside, what's going on, what I have done, this is very badly, you can see here. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुका है नीचे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पे। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कुछ ट्रिम कर दूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिएगा इसके में, जो क्या है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद आई कैन ट्रिम दिस ऑल्सो, मैक्सिमम ट्रिम कर दीजिए आपको, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है,
मतलब मुझे ये रखना ऐसे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और मैं इसे भी ट्रिम कर देता हूँ और इसे भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वांट टू ट्रिम दिस, सॉरी, कंट्रोल जेड, यू कैन प्रेस हियर, और आई वांट टू ट्रिम trim option. Okay, this is our trim option, you can see here. So what I have to do, I want to trim this also, this text also, okay, this line also, or this line also, you can trim. Okay, now I will join this line, this corner to this point. Okay, I will enter. So first I want to check the this 84 height. Okay, 84 height I want to check it. D, enter, modify, text size I want to increase 4. Okay, or close, or dimension we can check here. What is the coming? This is the wrong coming. Okay, so what I have to do, this is the wrong. Okay, so you can see here there is one option, one line. So I think this is our correct line, or I think this is our good line. Okay, so I need to just uh, this is our good line, or what is our thickness? I think this is good. Okay, so I will trim this point. I will trim this point. Okay, you can see here, or I want one more line, or like that. Just okay, or this over it. Okay, enter. Okay, so we will delete this dimension now. So now what I have to do, here I want one line. Okay, one line I want. Suppose if you don't have a line, so no problem, I think so. I just take one more line from this point to that point. Okay, downside, enter, this point. Okay, enter, you can see, escape. Okay, one more line I want. Okay, shift, right click, tangency I will take it, or from this point. Okay, enter, one I will take enter. First point we need to select, but before first point I will select, press shift button, right over mouse key, and we want tangent. Okay, so here we can use tangency, enter. Okay, so now what I have to do, you can see here, what is the problem, there is a R3 radius, so we need to put it R3 radius, click, or first object, or R, sorry, R, enter, 3, enter, or this is our R3 radius. Okay, you can see here. So now what I have to do, I will take one more line like that. Okay, so no problem, there is a line, enter. Okay, I will trim this, split, first object. Okay, R, enter, 3, enter. Okay, so you can use here R3 radius. Okay, almost our drawing has been completed. I will take trim line like that. Want to trim? Oh, sorry. Control Z, escape, or I want to delete it. Okay. Now what I will do? This is also I want to delete. Okay. Just click on over it and delete. First, we will trim this line, or we will trim this point. So almost our design has been completed. You can see here. Or we will take one center line. After that, I will check it. Okay. So almost our drawing has been completed, you can see here. So now what I have to do, 6 chamber, first line. Okay, or distance 6, enter, 6, enter. Okay, or we will take 1 6 mm chamber line, one more time interface it, or first line. This is our first line, sorry, I will take chamber, this is our first line here, you can see, enter, or distance I want
6 enter 6 enter, okay, or we will take second line. You can see here I need to trim this point as well as possible. So our drawing has been fully defined already. So now what I have to do, I want to take dimension. So we will take one more color, or I want just to by layer that point or dimension I will take it. You can see here what is the dimension has been come, 72 or like that, 84. Okay, now what I have to do, there is only 6 mm chamber as you see, but you can see here 72.00000. Why is coming? I don't want it. So press only D and enter, or my modify. I don't want. I will go to primary unit. I will on the trailing, then OK, then close. You can see there is a perfect. Now I will check that length 19 mm. This is good. Okay. Now what I want to do, that point. Okay. First I will define this point. This point to this point only 6 mm. Okay. Then also good. This point to this point. This is also good. Okay. You can see. And now what I have to do, I want to define this distance also. Okay. Or I want to define this point also. Like that. Okay. Now I want to define this point has been defined, but now I will define this point also. Distance. Okay. So you can define here. The point has been defined. Now I will define radius. Radius I want to define like that. R2. This is the radius. Okay. Or this point I will take enter, circle R8. Okay. Enter 3.5 radius. We can define diameter also. Okay, as well as possible. We can define, no problem. I want to define radius. Click on over it. I want radius. Okay, this is okay. Good. Okay. So almost dimension has been completed. You can see here. If something mistakes, so please take care of the drawing, or you can see, you can click that pic. Otherwise I will give you in my community, so you can take the drawing and try to be design. Okay. So what is the dimension of it? With some dimension I need to take. Okay, this is okay. 45.23.6 45.23.6 R2 R8 R7 diameter. Okay, you can see. Or what I have to do, 19, 16, 18 or 53 full dimension I need to define. I will define as well as possible. Okay, so there is no problem. This is our 53. You can see. Now what I have to do, this point I will take one more center line. Okay, so one more center line I will take it. This is our whole center line I want. Okay, so center line I will take magenta, cyan color, or annotate I will come, center mark I will take, or this is our center line. Okay, you can see here, this is our also center line, this is our also center line. You can see. Okay. Or one more thing I will take, center line I want this point to this point. Okay, I want this type of center line. Or now what I have to do, there is R23. R23, this means 11.5. 11.5. I want to take offset 11.5. Offset I want 11.5. Okay, 11.5. Or this point to the center line will not be offset taken. Okay, so you can define as well as possible. You just need to take one point. There is R23. I will go define. Okay, as well as possible. So thank you so much for watching my channel. Please subscribe my channel or like my video. Next video I will talk about one more drawing or design. Okay, so thank you so much for watching.